have our beautiful coaches with me, and we will be speaking on the topic why union may seem impossible to manifest. You may have been feeling that in your heart, and today we will go deeper into this topic and just, root out the separation there. So, I'm Sudhikya, an Ascension coach with Twin Flames Universe. And yes, I'll hand it over to everyone to introduce themselves. Hi everyone, I'm Revati and I'm an Ascension coach too. It's good to be here after a very long time for me. So yeah, I'm happy. Hi, I'm Shefali, Certified Ascension Coach with Inflame Universe. So I'm also happy to hear. Let's discuss and go deeper in the topic how union is impossible to manifest. So I'll hand over to Mayuri also. थैंक यू। नमस्कार सभी को। मेरा नाम मयूरी है। मैं भी ट्विन फ्लेम असेंशन कोच हूँ विद ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स। और आज के इस बहुत ही अच्छे टॉपिक में हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। और आशा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज है, उनको आज आप आंसर ढूंढ पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे ओपनली। सो लुकिंग फॉरवर्ड। Yes. यस, थैंक यू। Yes. So I feel like we all feel grounded, and yeah, let's just feel into our hearts. And who is getting the first piece? I think, you guys can start. Maybe just feel into the energy of it. It's such a common thing that we all experience, right? It just feels like it's impossible till it happens. So, yeah, let's just feel into the flow with God, and yeah. Revati, do you feel like speaking? Yeah, it's a good question. Like the first thing that comes to me is like a very common upset or block that we face in our community as Indians is like grounding. So like just because of we are so like high and spiritual, we may think that 3D union is very difficult and it's unattainable or it's unnecessary. Sometimes people think that almost disregarding that it's important what's happening in your physical reality and like what's occurring currently for you, because like the answer is given to you right now. So, and it's right in front of you. So yeah, like maybe there are like to look at parts where we ourselves, like it's present within you, that you yourself are blocking it. It's not something on the outside, or it's not because some um unknown reason that it's far away from you. It's actually inside of you, and you're in like 100% control and power you have in your union. So to really like um you want to go through the process of the inner work and like the mirror exercise, and you want to go inside of yourself through this spiritual process to find where you are blocking it and where you're actually denying it, because it is like actually like you're refusing it, so it's not showing up outside, or you have some lessons to learn, and that's okay too, like you know um yeah. And God, the thing that comes to me is like the lesson in like Jeff often refers to this in TFAS and Twin Flame Ascension School repeatedly, where
God will take you through the grocery store aisles, and like you need to pick up many things along the way, and you think that you're ready for your union and you want the final aisle articles, but you have like these many stops in between that you pick up this thing here and you need this thing over there. And so these qualities, and I feel like this is something that I've like learned from my journey is like I need to learn so much, like in values and like becoming the person, like my highest version, so like what that is for me. So yeah, you can't just many people are like excited and you want union immediately, but you want to become that, you want to become union to have uh, your union in peace. It'll just be natural, and it'll just be a natural like result of, yeah, you doing the inner work and you learning your lessons and like everything that God wants you to learn for you to become that person. Yeah. Yeah, I think it's a wonderful piece. It's the becoming, right? It's really understanding that you are your union, and when you actually become that, so nothing can really stop. I think it's a beautiful point. Who feels like going next? Have the next piece. I don't know, Mayuri. uh, एक ही बात जो मुझे पॉपअप हुआ जब रेवती जी बता रहे थे कि आप कहीं पे भी है अपनी जर्नी में, है ना, यू आर परफेक्ट, परफेक्ट लर्निंग योर लेसन्स। जैसे रेवती जी ने कहा कि इट्स बिकमिंग द परफेक्ट वर्जन एंड गोइंग बैक टू योर सेल्फ। सो आपकी जर्नी में अभी आपको जैसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई होप नहीं दिख रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बट परफेक्टली आपको गॉड वही ले जा रहे हैं जहाँ पे आपका परफेक्ट लेसन है, आपका हीलिंग है, आपका नेक्स्ट स्टेप है आपकी जर्नी का। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, डूइंग द वर्क एंड just follow the guidance, your intuitions, and सारे टीचिंग अवेलेबल है ना, आपको बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है अभी तो, काफी गाइडेंस मिल रहा है। सो जस्ट यू हैव टू फॉलो, persistence is the key. So yes, you can do it. It's not कि आप नहीं कर सकते या नहीं बढ़ सकते, you can do it, everybody can do it। बस वही है कि उस फेथ को बरकरार रखना। कई बार आपको आपका फेथ ही आपका फॉर्च्यून है जर्नी में, है ना, तो वो फेथ जरूरी है कि बार बार आप उसको डगमगाने ना दे, और वहां पे थोड़ा आप खुद को बूस्ट करना। और ये जो आज का सेशन है, लाइव सेशन, ये भी इसी का एक पार्ट है कि आपको थोड़ा इस जर्नी के लिए बूस्ट मिले, गाइडेंस मिले, है ना। सो वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि ये लाइव है अभी, सो जो भी क्वेश्चंस है आप जरूर बताइए, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा डीपली कम्युनिकेट कर सकते हैं, सभी कोचेस एंड गाइड कर सकते हैं, राइट। सो ठीक है। Yes, that's a beautiful point. I think it's a process, right? तो हम जब भी ऐसे यूनियन वाले प्रोसेस में खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो इट्स बाउंड टू हैपन, देर इज़ नो अदर वे, बिकॉज इट्स रियली लाइक, एक जैसे जेफ भी बोलते हैं ना, इट्स अ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन दैट वी अचीव। सो इस प्रोसेस को आप कंप्लीटली एम्ब्रेस कर लेते हो, तो फिर आपका यूनियन तो होना ही है। एंड येस, दैट्स अ ब्यूटिफुल पॉइंट। एंड येस एवरीवन, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, जस्ट राइट डाउन वे यू फील यू आर गेटिंग स्टक, क्यों आपको लगता है कि यूनियन नहीं हो पाएगा आपका। बहुत सारे लोगों को लगता है इस लाइफ टाइम में नहीं हो पाएगा, बाद में होगा, या जो भी आपके माइंड में आ रहा है। ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन इन द क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, एंड हम लोग आएंगे इस पे एट द लाइक एज वी रैप अप द लाइव, विल टेक द क्वेश्चंस। यस, शिफालिका। यार, जैसे रेवती जी एंड मयूरी जी शेयर कर रहे थे, राइट, मेरे को एक स्टोरी याद आया। मतलब एक
जैसे कि हम लोग बॉस में बैठते हैं ना, कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, यूनियन इज लाइक दैट। सो हम लोग डेस्टिनेशन पहले से डिसाइडेड होता है, हम लोग पहुंचना है हम लोग को, तो यूनियन तो होना ही है। बट इतना है कि आगे हम लोग को जितना रास्ता दिख रहा है, क्या हम लोग उतना रास्ता जा रहे हैं, या हम लोग फोकस करें कि डेस्टिनेशन के ऊपर डायरेक्टली। सो डायरेक्टली डेस्टिनेशन में फोकस करने से बहुत हम लोग हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो वो उसी टाइप का ब्लॉक आएंगे आपको मतलब हील करने के लिए मिरर एक्सरसाइज में। तो ये गाइडेड मेरा आ रहा है कि आपको जितना दिख रहा है, क्योंकि आप अगर इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, गॉड आपको गाइडेड कर रहे होंगे कोई, मतलब आगे क्या है जितना तक आपको दिख रहा है, तो उसी में फोकस कीजिए। उसी को हील करेंगे तो आगे भी आपको रास्ता दिखेगा, एंड आप यूनियन तक पहुंच पाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपना फीलिंग्स पे जाइए, वन स्टेप एट ए टाइम, एंड हील करते रहिए, एंड यूनियन में तो पहुंचना ही है। सो या दैट्स व्हाट। Yes, yes, that is beautiful. I think one step at a time, and that's what like the teachings also say कि put one step in front of the other and then you go, क्योंकि obviously पूरा तो नहीं दिखता है. And yeah, yeah, I'm also feeling into it, and like what I'm seeing that um like there used to be this saying when I was in school, okay, that impossible itself says that I am possible. I don't know, it sounds very cliche, but it just, came, it just popped up in my mind. And yeah, whenever I think of something which feels impossible, the whole mindset around it is what matters, I feel. कि अगर आपको इम्पॉसिबिलिटी दिख रही है, ओके, देन दैट इज़ एन एनर्जी टू ओवरकम. अगर आपने उस फियर में खुद की एनर्जी को दे दिया, तब आप उसी इल्यूशन में फंसे रह जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. सो इट्स अ फियर कि मेरा यूनियन जो है वो नहीं हो पाएगा, ओके. एंड जेफन चलिया इस जर्नी में बार बार बोलते हैं, ऑलवेज सरेंडर टू लव, लेट गो ऑफ फियर. तो जो भी आपके माइंड में फियर्स हैं यूनियन को लेके, वो सबसे ज़्यादा आपको ट्रैप करती है, सबसे ज़्यादा आपको ये फील कराती है कि आपका जो यूनियन है वो इम्पॉसिबल है. सबसे कॉमन चीज़ें मैं लेती हूँ, ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, ट्विन फ्लेम की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दे ऑलरेडी हैव अ फैमिली, ट्विन फ्लेम कहीं और रहता है, मैं नहीं जानती ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, मैं नहीं जानती मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं. देर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स रियली, बट ये समझो कि यूनियन जो है वो एक जर्नी है फॉर यू टू मीट गॉड, ओके. ये कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, जो इनफैक्ट भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने बता के रखा है ना, द सोल एंड द स्पिरिट, द मीटिंग ऑफ द सोल एंड द स्पिरिट, दैट इज़ यूनियन, व्हाट जेफ एंड शलिया ऑल्सो टीच, ओके. दैट इज़ एग्जैक्टली इट. तो ये बात आप हील करते करते गॉड के साथ आप जब यूनियन में आ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लोगे. देर इज़ नो टू वे अराउंड इट, ओके. ऐसा नहीं होगा कि आप उस वाइब्रेशन को अटेन कर लो और आप देखो तो आपका ट्विन फ्लेम तो है ही नहीं. ये हमारे किसी के साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, जिन्होंने भी teachings के completely, they have gone deeper into the teachings. Everyone has been able to find their twin flame. So यहाँ पे वही है जो इवन शफालिका ने बोला है, एंड एवरीवन, मयूरी, रेवती, एवरीवन हैज़ फोकस्ड ऑन दैट थिंग ओनली, दैट इट इज़ आपका पहला तो गोल जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. इट्स अबाउट यू बिकमिंग योर डिवाइन सेल्फ. डिवाइन सेल्फ मीन्स द वन विच होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लव, विच होल्ड्स गॉड्स लव. और उसमें आने का, उस बिकमिंग में आने का जो प्रोसेस है, उसको अगर आप फॉलो करते रहो without giving into any fear, then there is no way that your union cannot happen. So let go of fears. See that impossibility जब आप feel करते हो, does your heart light up? No, right? It constricts. So it is a fear. And when you feel your feelings here, that आपको क्यों यूनियन जो है वो इम्पॉसिबल लग रहा है,
you will be able to identify the upsets. And उस पे जब आप मिरर एक्सरसाइज करोगे, then वो energy ही ख़त्म हो जाएगी. The next moment, you know, maybe you have healed, like maybe there were 50 upsets which were making you feel that, oh, union is impossible. सारे आपने heal कर लिए, अब देखना next moment में आपको लगने लगेगा कि oh, दिस वॉज सम इल्यूशन जो मैं शायद अपने हार्ट में जगह दे रही थी जिसको. And now that this energy is gone, suddenly my union feels possible. And I have seen that in my journey again and again, where I just feel like, oh, this block तो इसके आगे तो जा ही नहीं जा सकती मेरी journey. ये तो ख़त्म है ख़त्म. Like this has happened so many times. But जितनी बार that is just ego coming up to be released. So जितनी बार मैंने वहाँ पे जाके खुद को लव दिया है through the mirror exercise, God has been able to come in that place, and God has been able to show me that yes, this is the next piece. Okay, so the journey does not end, union is not impossible, it is a continuous process. You just need to have faith and just release your fears and walk the path. Yeah. That's really cool. As you were speaking, I just felt called to like shuffle some cards, and I thought, yeah, I just pulled some few cards, and it was perfect what you were sharing. It's like the first one is like wandering path, and it says, enjoy your journey, enjoy the journey. Yeah, this is yeah, it doesn't matter what it looks like on the outside. You need to, union is inside, it's inner. And so you wanna, no matter what, union is not the outside. You want to focus completely on what's occurring inside of you all the time. And there's a picture of a map here. So it's um, like Sudhika shared about uh, what if your twin flame is married to someone, or they have another family, or whatever the outside, or they are a different gender or religion or um, sex, like whatever your orientation, like LGBTQ. Um, it doesn't matter what's on the outside, but the your truth, like the divine truth of your union, still remains in God. So, like, um, yeah, your twin flame, and you are always going to be together, and you're designed to be together. So, yeah, God takes you on that journey. What your personal lessons are of what that theme is in your life, in your story, and that's okay. And that's completely nothing wrong is happening. I think many people feel that feeling of, oh no, like this is how my story is looking, and um, no, that's God taking you on the journey. I see. And like the next no natural card that came up was like discovering truth. So yeah, it's like you'll always go to the truth. And definitely I always say, like, I love that, like that the truth will always feel good to you. And yeah, like the third card was joy and delight. Yeah, it's like the good feeling. And your union's like the good feeling. And it's all you need to go towards. Yeah. And this thing just fell. So it's like overcoming obstacles. You can do it. Yeah, you can totally do it. You can heal any block with the exercise. Yeah. Mm. Yeah. Yeah, I think that is perfect. Like all the cards were just perfect to the point. Thank you so much. And yeah, it just feels so good in my heart to really feel into that energy, that it's just like we are walking the path, and
it is who we are becoming, and that becoming is going to give us the union. Yeah. Sorry to interrupt. We have one question from Tithi. Her question is, I have this belief that my twin flame won't ever change, and because of that belief, I feel sad. I have done the mirror exercise for this, but I still feel sad. Can you please guide here? Tithi is asking this question. So already जो आपने cards pull किए, all the questions मुझे लगता है सारे cover आपने already किए हैं, but we can elaborate and we can help her here too. आप बोल सकते हो जिसको गाइडेंस आ रहा है. रेवती, यू आर फीलिंग गाइडेड Yeah. or I was feeling Mayuri already has the answer. She okay? wants to answer. Yeah. Yeah. Please go ahead. Yeah, so it's all about के persistence, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, persistence is the key. कई बार हम एक ही अपसेट बार बार हील करते हैं, है ना, कि लेयर्स बाय लेयर्स हम हील करते हैं, कि हमें लगता है कि हम क्यों बार बार एक ही अपसेट क्यों हम फेस करते हैं, है ना. ये क्वेश्चन हम सभी ने शायद अपनी जर्नी में फेस किया है कि ट्विन फ्लेम चेंज नहीं हो रहे, है ना. तो हमारा पूरा फोकस ट्विन फ्लेम को चेंज करने में लगा रहता है, बट द जर्नी इज नॉट अबाउट चेंजिंग हिम or changing the twin flame outside person. It's all about feeling peaceful within. आपका जो ट्रिगर है, आपका जो बुरा फीलिंग है, आप जितना मिरर एक्सरसाइज आप करते हो, बाय द टाइम यू फील कि ओके, जो आप कर रहे हो एक ही अपसेट आप बार बार हील करोगे, एंड देन उसका जो इंटेंसिटी है आपको काफी रिलीज होता है, एंड बाय द टाइम आपको रिवील होता है कि ओके नाउ यू फील कंप्लीट पीसफुल, एंड दैट्स द की. वही आपका एक परफेक्ट साइन है कि आपको बाहर साइन ढूंढने की जरूरत नहीं. यू फील दैट कि ओके नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दैट अपसेट कंप्लीटली, है ना. सो ऑलरेडी मिरर एक्सरसाइज काफी पावरफुल टूल है हमारे पास, एंड एवरी टाइम जब आप उसको हील करोगे, यू सी द फीलिंग्स के आप काफी डीपली कनेक्ट कर रहे हो, एंड उसको रूट से आप हील करते हो. So, anything else you want to add to this answer? Yes, I think एक और चीज जो book में भी mentioned है is that one upset will keep coming in layers till it's completely healed. So you need to keep asking yourselves कि how are there still thoughts. एक point आता है जहाँ पे it heals in layers, and I think एक point पे it really clears from the core. So that does happen, and a lot of people have said that when it gets cleared from the core, suddenly you feel like yes, your harmonious union is happening. So don't give up. I think persist and just keep going. Don't give up. Yeah. Yeah. Just felt like adding Mm. that, Yes. yeah, that if you know that something needs to look a certain way on the outside, and like like that it's divine, like it's a good thing and it's supposed to be like that for your union, um, you don't need to give that up. Like you get to keep that desire and like your core value. So if your union's supposed to be like, hey, this is how my twin flame is and this is how my union is, you know that there's something still there for you to be healed, for it to shift on the outside. So you probably just need to look at it in all kinds of angles and like heal it from all ways for it to actually shift on the outside. So yeah, it's not that it's not happening or like uh you're complete. You'll know when it's complete. Like you're supposed to have that complete desire of what your union's supposed to be as in truth. यस, जैसे बोले ना कि बाहर चेंज नहीं हो रहा है, ट्विन फ्लेम चेंज नहीं हो रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग मतलब बाहर फोकस करते हैं ना ज्यादा, तो हम लोग अंदर में फोकस करना चाहिए
इनर वर्क करके। तो बेसिकली एक तो एक्सपेक्टेशन जाने देना पड़ेगा, एंड अगर बाहर चेंज नहीं हुआ है तो आपको अंदर पीस फील हो रहा है क्या? तो क्योंकि आप अगर हील करोगे, जैसे सब लोग बोले कि मतलब ब्लॉक्स लेयर में आते हैं, तो वो आपको डीपर जाने का जरूरत है ब्लॉक को। ओके, आप अगर ब्लॉक के अंदर होंगे तो बाहर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। रिजल्ट नहीं दिखा रहा है मतलब, तो आपको अंदर डीपर जाने में, लेयर को हील करने में जरूरत है। सो या, दैट्स द आंसर। Yes, I think it completes the piece sort of perfectly. Yeah, Yeah. it's actually the piece. Uh, Yeah. Sorry, interrupting. So देखिए Yeah. आगे we have communications lot going. दो Okay. question और है हमारे पास. Yes. So Yeah, let's. anybody wants to like? अभी मैंने देखा दो और questions है. So it's a good कि लोग participate कर रहे हैं, अपने queries questions raise कर रहे हैं. So another question is from Padma Priya. I have one question. Why twin flame journey most similar to narcissist personality traits? In twin flame journey has also honeymoon phase and separation, and in NPD also first phase love bombing or honeymoon phase and after that discard. Please give clarity about it. I'm feeling like answering this because I used to feel the Yeah. same thing. But see, there could be two things, like very, this is like you need to really use your discretion here. There are times when people are going through a real toxic connection and people think that it's a twin flame. So it's very important to have that knowledge. You don't, even with a twin flame, you don't need to give in to a behavior which is, bad. Okay, they are like, they are really behaving like a toxic person. Then just have a boundary and then, just heal. But I'll tell you what is the difference between narcissistic NPD and twin flames. Okay, NPD is really something which should not be, even the term should not be taken that lightly. It requires a medical diagnosis. Okay, so it's like if you're seeing such traits in someone, please, have boundaries, disconnect and do your inner work and see if there is a shift. With twin flames, what happens is that this I'm speaking more on the gray area here. Okay, जो एक ग्रे वाला पोर्शन होता है ना, जब हम जर्नी जस्ट स्टार्ट करते हैं, हम भी परफेक्ट डिवाइन सेल्फ में नहीं होते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेड्स जहाँ पे हम खुद के साथ ही बहुत टॉक्सिक होते हैं. ओके, लाइक आई ट्राई टू टेक एनर्जी फ्रॉम माई सेल्फ, पुट माई सेल्फ इन टू टॉक्सिक अमाउंट्स ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग. So these were sort of patterns. Okay, so when my twin flame used to, he even didn't used to do anything, let's say. Okay, but I used to just get triggered. I used to feel like he's a narcissist. Okay, and I used to tell him also. So later on when I healed and I found out that no, when I'm healing, then it's just feeling like, okay, that was a miscommunication, or it was just something which I was holding on to. Okay, so that is how, at least for me, like that energy got cleared, and it happened when I was very sure that he's a narcissist. Okay, there was no telling me that, oh, he's not. I was like completely in my heart ki he is. By humbling myself down, by doing the mirror exercise, feeling on my feelings, when that upset really got cleared, that's when I came to know that, oh, I was projecting something onto him. So, healing is very important here. As you heal, as you clear the energy, if you're projecting something, that will get cleared. Okay, and if you're healing it, you will also come into this energy of having power. There is a TFAS class where, Jeff and Shilya talk about the divine feminine, how she behaves, and mainly the energy leaks and everything that happens. Okay, and I'm bringing this up in the narcissistic thing because uh, a lot of narcissist dynamics, okay, in every spectrum happen because we are not able to claim our power there. Okay, so when you go very deep into your healing, you will be able to also, like, claim your power. And then let's say it's a twin flame, they will actually, there, if there are misunderstandings, or if there was a genuine, narcissistic tendency, it will get healed, it will get cleared. So you have to, like, connect and communicate in the healthy energy. Unhealthy energy, always have a boundary and then heal it. Okay, and if it is an out and out NPD, then they will just fall away from your life.
Okay, don't worry about that. Your healing will just break that entanglement that is happening. So both cases, I feel like, focus on your healing. Yeah, I just had that piece to share. Yeah, just to add, when you shared about power and like this kind of toxic relationship dynamics, MAP is a good trauma healing uh, modality that you can opt for, because lot of, at least for me also, I experienced it for me personally to that it was essential for me to go through MAP to actually heal. Yeah, like you feeling powerless, or like this trauma repeat loop that you may be stuck in relationships, and you keep attracting the same thing over and over again. So yeah, that's also really important and very powerful uh, tool. Yeah, to heal your trauma like permanently, so you'll feel free. Mm. Yeah. So actually, in this, I will say kind of these toxic patterns comes always initially in the journey, as Sudhikshya told. So for me also, I have also faced. So unless until you heal, basically आप अगर उसको heal नहीं करोगे तो आप उसको constantly face करते जाओगे, चाहे आप अपना relationship change करो या अपना friend circle में या work या घर में हो, हर जगह फेस होता है जब तक आप उसको हील नहीं करते. हम लोग बोलते हैं कि मतलब ट्विन फ्लेम वो प्रोजेक्ट करते हैं, बट ट्विन फ्लेम ज्यादा प्रोजेक्ट इंटेंसिफाई करते हैं, बट वो हर जगह हम लोग के रिलेशनशिप में होता है. इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग उसको हील करें. क्योंकि जैसे होता है एक टॉक्सिक पैटर्न, हम लोग नो नहीं बोल पाते हैं. होता है ना, इनिशियली हम लोग नो नहीं बोल पाते हैं. मैं तो नहीं बोल पाती थी. तो इनिशियली इसीलिए होता है ताकि हम लोग नो बोलना सीखे, हील करें. बाउंड्री कैसे बाउंड्री बनाते हैं हर जगह. ऐसे बाउंड्री हम लोग सिंपली बोल देंगे तो नहीं होता. हर एरिया में आपको हर एक रिलेशनशिप में ईच एंड एवरी एरिया आपको पावर क्लेम करना पड़ेगा आपका. एंड आपको बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना रियल ट्विन फ्लेम को देख पाओगे, खुद को देख पाओगे. पहले तो खुद को अपना डिवाइन सेल्फ में देखना है. अगर खुद को देख पाए तो ट्विन फ्लेम को आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है एंड क्यों चेंज नहीं हो रहा है एंड क्यों टॉक्सिसिटी दिखा रहा है. ओके, सो दैट वाज माय पीस. आई थिंक सारे आंसर्स कंक्लूजन यही है कि कीप डूइंग द वर्क एंड कीप गोइंग डीपर इन योर हीलिंग. Yes. इट्स ऑल अबाउट हीलिंग दैट द थिंग जो नार्सिसिस्ट आप पैटर्न फेस करते हैं आउटसाइड बिहेवियर, है ना, वो कहीं ना कहीं आप होल्ड कर रहे हैं. सो यू हैव टू लुक विद इन एंड द मोमेंट यू हील दैट, आप वहां पे रिलीज फील करते हो. आउटसाइड आपके रिलेशंस में भी काफी, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास. इट इज फ्रॉम कीर्ति प्रजापति. So his question is, I'm healing separation from my twin flame and it's been 3-4 years. My twin flame has blocked me from everywhere. Only one question come, is she my true twin flame? My heart says yes, but nothing outside. So ये चीज मैंने काफी फेस किया है. So I can say about it. So जब ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है वो भी नहीं मुझे पता था. उससे पहले भी मैं अपने ट्विन फ्लेम से काफी कनेक्टेड थी, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द जर्नी एंड द ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट एंड एनीथिंग. सो काफी वक्त लगा मुझे, क्योंकि काफी ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो बिगिनिंग फेज होता है ना, वो ऑल अबाउट जो अवेकनिंग बोलते हैं एंड काफी कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड बहुत सारे आपके ट्रॉमास रिवील होते हैं, आपके अपसेट्स रिवील होते हैं. एट द टाइम आपको नहीं समझ में आता कि सामने वाला पर्सन ट्विन फ्लेम है तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है.
है ना। सो ये बहुत क्वेश्चन कॉमन रहता है कि क्या वो सच सच में मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, कि कोई मैं मेरा लाइक फॉल्स है, या तो कोई मेरा वहम है, या ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं ना जर्नी में। बट बाय द टाइम काफी वक्त, एक वक्त था जब मुझे बस अपना हीलिंग ही फोकस करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जब क्लैरिटी बाहर उन पर्सन से ढूंढने जाते हैं तो और बुरा लगता है, और बुरा बिहेवियर फील होता है उस पर्सन से, क्योंकि वो और उसको एम्पलीफाई करते हैं अपसेट्स को, जब तक आप उसको हील नहीं करते हो, है ना। सो अगर वो आपके सच्चे ट्विन फ्लेम है तो आपके हीलिंग के बाद वो क्लैरिटी आपको रिवील होता ही है। एंड अगर नहीं है देन आप वहां फ्री फील करते हो, उस जो एक अटैचमेंट कहो या को डिपेंडेंसी कहो, उससे फ्री हो जाते हो, है ना। सो once again going back to your inner work and keep doing the work. Yes. What I feel about this question. आई थिंक एक चीज़ जो मुझे मेरे माइंड में आ रही है इज़ दैट आई हैड दिस पैटर्न ऑफ romantic codependency in my union, okay? And because of which, like, there's separation for no reason, I feel like, मतलब है obviously, मतलब ऐसे कुछ ज़बरदस्त सा कुछ conflict नहीं है, it's just that इतना codependency है कि उसको heal होने में शायद बहुत time लगेगा, okay? And that's what I have been going through. So my own journey has been around not being okay, not knowing if this person is my true or false twin flame, okay, and really being happy in that relationship with God, like, doing my life purpose, because I was never like this, even if I used to do a lot of work and everything in my life. But वो relationship वाला thing होता ही था कि I am always talking to someone and then there is someone there, okay. वो समवन को हटा के आई थिंक इफ़ यू ब्रिंग गॉड इन टू योर लाइफ एंड यू आर ओके, बिकॉज सबकी ही जर्नी में ये फेज़ आता है, मे बी ही इज़ थिंकिंग दैट इट्स जस्ट with him, but it's with everyone. So Well, it yes, happens, that's yeah, right. yeah, yeah. It happens in all the journeys that there'll be a phase where you are going through this spiritual wormhole sort of, जहाँ पे you will not know कि आप जो कर रहे हो exactly this person is your twin flame, false twin flame, and God will call you very deep into your purpose at that time. And when you ground your purpose, then it's going to really ground you into the union energy, because I feel like आप जब लाइफ पर्पस को लिव करने लगते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यूनियन की भी ग्राउंडिंग होने लगती है, बिकॉज यू कनेक्ट विथ योर ट्विन फ्लेम ऑन सम पर्पस, राइट। ये हम सब लोग बोलते हैं, या तो आप एग्जैक्ट सेम पर्पस शेयर करो या तो अलग अलग पर्पस करो, बट वो जो एनर्जी होती है कि आप रिलेशनशिप को, एक इंसान के साथ जो रिलेशनशिप में एंड ट्विन फ्लेम के साथ मेनली बात करने में, रिलेशनशिप में रहने में जो एक आदत हैबिट जैसी बन जाती है, उसको थोड़ा सा सरेंडर करके take this time, I feel like, to just build that purpose within yourselves. And that relationship with God, that purpose with God, will bring you into a place when you are not like really bothered about who your twin flame is. It's like, okay, ho jayega, sort of. That trust you have in God. एंड व्हेन दैट ट्रस्ट कम्स, वो फ्लो आ जाएगा लाइफ में, एंड वो जो यूनियन का फ्लो होता है दैट विल अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम, आई थिंक, वेरी इजीली. एंड everyone's journey is very different. Some people actually heal for like 6 years and then suddenly their twin flame is there. So I feel like it's just that, what we all have been saying, that keep going in the journey. Yeah, I think that was a piece which was coming to me. Yeah, something came up naturally was many people will say that, I'm healing for 3, 4 years and it's still like I'm still blocked. That you want to see how you're healing. So it's not like, you do it like, oh, I'll just do it once in a while. And then you're like in and out. You're like, you'll heal one block, but you're not really like committed fully. You're not going all um, in your, when I say like committed and going all in, it's more like, um, all of your life should become of your twin flame journey, and like that's your like
you breathe it and you become it, and like that's all that's your life, like that is you. So you need to become it, and then that's so all parts of your living. So it's not like, okay, I do my inner work and it's like this practice, like the inner work, I do the inner practice. But like when I'm like going about my day and like my living life, you do something else in your mind, and your thoughts and your feelings are like involved in the world. Yeah, you can't do that. Like you have to actually, you need to like bring your twin flame journey everywhere, like that. So you need to essentially have the teachings of union and like breathe it. Like you need to, there's no other way. Like if you're just like tiptoeing and you're not working with your coach, you're not doing like weekly your group coaching or like your sessions, and you're not watching TFAS, you're not doing LPC, you'll feel this, you will experience this vague, uh, your journey looks very vague and it's very random, and it's, you don't have like concrete direction. You won't see concrete themes that, okay, this is my step, this is my, like, these are my next steps, and I'm going in this direction, and these are what I'm healing. So you won't know like your spiritual process and your spiritual journey. So for you to know that, you need to commit to your coach. You need to show up every day. You need, your inner work needs to become like a 24 hours breathing thing that you do and you live. And like only when you go all in in every place, that's when your twin flame like has to show up and becomes your life. Like union becomes your life. And like that's the only way. Anything less than that is not okay. You have to, you have to just say yes to God in every place, in every area of your life. And yeah, that's when like you don't have any choice. That you doing the work and you doing the process, like the result will be like an obvious like result. Yeah. Yeah. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे कि वो बोले कि मतलब ब्लॉक कर दिए हैं बहुत दिन से, पता नहीं चल मतलब आउटसाइड पता नहीं चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं। ऐसे तो हम लोग भी ब्लॉक किए हैं बहुत बार। हम लोग अपना ट्विन फ्लेम्स को, तो अगर ब्लॉक किए हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज फिगर, ओके, देयर इज समथिंग, मतलब फील करने का जरूरत है कि कुछ तो है वहां पे। ओके, आपका कॉन्शियसनेस में कौन आपका ट्विन फ्लेम है? अगर ट्विन फ्लेम है भी नहीं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्विन फ्लेम है, तो फर्स्ट ट्विन फ्लेम का भी उतना ही जर्नी में इम्पैक्ट रहता है जितना टू ट्विन फ्लेम का रहने वाला होता है। ओके, क्योंकि आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम आने वाला होगा, तो फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ भी आपको वही हील करना पड़ेगा। अगर वो ब्लॉक किए हैं तो आपको देखना क्योंकि आप अभी भी पूछ रहे हो कि वो ब्लॉक किए हैं, तो आप उससे बेसिकली कुछ तो ब्लॉक आ रहा है कि आप कंप्लीटली डिटैच नहीं हो उस ब्लॉक से। तो वहां पे आपको थोड़ा डिग करने का जरूरत है कि मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक किया है तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अगर क्योंकि अगर वहां पे भी सब चीज पीसफुल होता तो अनब्लॉक हो ही जाता ना, क्योंकि आप अनब्लॉक किए हो तो वो ब्लॉक किए हैं, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो है वहां पे। तो आपको वहां पे देखने का जरूरत है। ओके, तो गो डीपर इन द ब्लॉक, क्योंकि यू कैन मतलब यू आर ऑब्वियसली फीलिंग दैट ब्लॉक, सो वहां पे मिरर एक्सरसाइज करने का जरूरत है। गो डीपर, क्योंकि हम लोग जेफन चले हमेशा बोलते हैं कि हम लोग का ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 या 3 कोर ब्लॉक होते हैं। जब वो हील हो जाता है, यूनियन हो जाता है, तो हो सकता है कि वो आपका कोर ब्लॉक हो। ओके, थोड़ा वहां पे डीपर जाने का जरूरत है। तो या Yes, I think एक जो मुझे piece आ रहा है, like, to even, like, as one concluding piece to this discussion that we had, like,
I think ये जेफ बार बार बोलते हैं, you're not making a hut or a small, like, house. You're making, like, God is making a palace for you. Okay? So it's like every block, like, you guys said that every area में, like, आपके finances के भी एक एक, रुपी में, dollar में, God will try to, like, heal that separation. And we are not trying to do anything else. God will try to make you feel into every area of your life and allow you to feel that thing, and then ground God in that thing, in that place. So that is like harmonious union, right, for me. And I have experienced that key, means I'm in the process of it, but I'm experiencing ki, okay, this is how God is probably asking me to heal. So yeah, that only जो हम बोल रहे हैं कि process पे वो करो. Don't worry, it's a very big thing that we are trying to build, because जिस consciousness में हम लोग रहते हैं, that is बहुत ही ज़्यादा 3D एंड फियर कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग, उससे बाहर निकल के coming into just a place where you are not feeling your triggers is a big thing in itself. From there to go to a place where you are really connected with love at every, in every inch of your soul, sort of. That is a massive, massive goal, and it is possible, okay? But only thing is that don't, like, judge the twin flame journey के जो outcomes है, जो results हैं, don't judge them, don't put them on the same scale as the world, okay? World में चीज़ें थोड़ी जल्दी आ जाती हैं कभी कभी, okay? Because there is some ego at play. Here, there is no ego. God will strip down your ego completely. Okay, and if you remain with the teachings, if you remain with Jeff and Shilya, like everyone in the community will make sure that you are actually healing through your blocks, right? So keep healing, keep, like, letting go of the ego consciousness, and dhire 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 dhire, that love will itself, like, tell you, like, that love itself is enough. Then I think it won't matter. Yeah. Yeah, I think, yeah, we have 10 minutes left. I think we don't have any other comments now. We have answered. So yeah, I think let's just feel into the conclusion of it, and yeah, whatever is coming through, let's share here for whoever is, like, going to uh, whoever is facing challenges, how to give them hope to, like, carry forward. So yeah, maybe we can feel into that. Yes, anyone wants to share? Yeah, like a piece came for me was yeah, I see with a lot of Indian clients, like um they would focus so much on the spiritual inner work sometimes, and you do inner work and you do inner work and um the kind of people they may be, that's how I was too. Like if you've had previous experiences being having a spiritual practice and you're like the monk type, so you'll only focus on the spiritual and you think that you are, yes, I am healing my union and it's happening. But it's also equally important. You should remember that this path of harmonious union is you living that inner spiritual union in your life. So there are a lot of people who will won't take your guided action steps. You won't make that change on the outside. So you'll just keep repeating your inner work. So you'll go round and round. But like if God's
if you're working with a coach with Twin Flames Universe, and the coach tells you that this is your action step, do this thing, like, you need to file for divorce with your karmic partner. You have to take those steps, like go to the court, go 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 meet the lawyer, go do these things, like, so a lot of times, like, you may feel like, oh no, like this is where I'm stuck and this is where I'm at, and now I'm just going to keep doing inner work. I'm just going to do it inside, and you just keep like rotating. But you don't want to do that. You want to take your be courageous, and like be like you have to be like bold, and like be break those societal worldly ecosystem that the world has built, and they make you very scared, they make you trapped, they make you like these conditions of like, oh, religion, your twin flame is like of a different religion, or they're married and this family, like how I'm gonna look like if I get a divorce, and this Indian family system, whatever. So the or like same sex, but I'm like Indian, or yeah, like these conditions, or what it looks like in your lived reality. You need, yeah, that God's above that. So you need to make sure you choose God and God's reality. And yeah, and you take those steps. And when you do inner work with the guided steps that, that naturally comes up in your process with your coach, and like you just know it and you take the step, God will show you like the next opening. And like that's how the journey is supposed to go. And this is how you manifest. So it won't be impossible. It's not going to be like, oh, now I'm just stuck and I'm like doing this fighty shit. But like, no, like you're like, it's a real thing. Like it's a very real, tangible, lived experience. So yeah, finding that is very relieving. You may think it's scary, it's actually peaceful. You like it. Yeah. That's what I felt. Yeah, that's beautiful. Shafalika, any closing guidance that you're receiving? या रेप्ती जो बोल रहे थे कि जैसे कि हम लोग 5D में लॉस्ट हो जाते हैं ना, बहुत सारा काम करते हैं तो एक्चुअली हम लोग को 3D में वो चीजें चाहिए। सेम मेरे साथ भी होता था कि मतलब हम हाई रहते हैं, 5D में रहते हैं, कभी कभी हम लोग को ये भूल जाते हैं कि सच में यूनियन हम लोग को चाहिए क्या, मतलब गॉड के साथ यूनियन चाहिए या Hmm. गॉड के मतलब या सिर्फ गॉड ही चाहिए आपको, क्या आप अलाउ कर पाएंगे किसी पर्सन के थ्रू गॉड को फ्लो करना? ओके, क्योंकि वो 3D में ही होगा, राइट? हम लोग गॉड को फुल्ली ट्रस्ट कर पाते हैं कि नहीं वहां पे, कि गॉड वहां पे फ्लो होंगे आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू? तो एंड जैसे होता है कि बहुत सारा सोसाइटल फियर्स आता है, बहुत सारा चैलेंजेस आता है, क्या आप उसको फेस करने के लिए रेडी हैं? क्या आप कर पाएंगे वो चीजें? एंड ये है कि जैसे बोले कि सुदीक्षा, इट्स इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सो ये पॉसिबल है, आप भी कर पाओगे, एंड वही मिरर एक्सरसाइज के थ्रू ही होगा। रिपीट एंड रिपीट, गो डीपर, वर्क विथ योर कोच, एंड ये पॉसिबल हो पाएगा। यही मेरा क्लोजिंग कमेंट है कि इट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू गो थ्रू लिटिल बिट 3D challenges, जो कि इट्स ओनली challenges, but once you heal it and come to a place of peace, then it just dissolves and you manifest the next thing and in your union through your twin flame. Okay, so that was my piece. Yes, I think yes, that I think beautifully concludes the energy. Yeah, so Mayuri, do you want to add something here? Okay, I think there's a glitch on her side. We'll just maybe give her 2 minutes. Yeah,
So yeah, I think what is coming to me is really not to give up whatever is in front of you, okay? Because we give our power to the external so much that, we don't even understand that we are divine children of God and we are actually creating our reality. It's not like, I actually saw a reel today. Suddenly, it just popped up in my mind. It said, why the word universe? It's like you inverse. Okay. So that was like a perfect thing which just came into my mind, because your universe is you in, like, reverse. So it's all that you are creating in your reality. Okay. There is no one else. And this sounds like, it depends on how long you have been doing the inner work. Initially, it just sounded like a crazy idea to me, that what, like, will this be true? But if you are doing the mirror exercise and you're building that, connection with God, then, these ideas will seem more believable to you, because these are divine ideas. You have to be in a divine frequency in order to be able to understand them. Okay. So wherever you are in your twin flame path, okay, many things may feel impossible to you right now, and that is not because they are really impossible. It's because of your energy, because of the kind of programming that you are, like, used to. Certain things will just seem like, oh, this is just not gonna happen. Okay. But trust me, with your healing, you are going to, achieve that peace. Like, I was healing my own journey, and at one point my twin flame is like, are you shifting timelines? So he was like, something is happening, something is getting shifted. So I also felt that, because we don't know a lot of things about how the universe works, how God works, and everything, it seems very unreal to us. But the mirror exercise, trust me, is most powerful thing ever. Like, love is the most powerful energy. And mirror exercise directly helps you bring love into that separation consciousness that you're holding. And we are undermining still the kind of miracles that can happen through consistently applying the mirror exercise and not giving up. That's all, you require. Even I've been doing the journey for a very long time. I had done other practices and all. And, like, this seems very easy. So honestly speaking, there were times when I used to feel that, okay, just by the mirror exercise, will it be possible? Because it just seems like I'm just loving myself. But the kind of shifts that I have seen, when I am, like, really, humbling down, and then keeping I'm just continuing my journey. It's a very massive shift that I see. Yes. And I think, Mayuri, you can sort of conclude it. We have added our concluding pieces. Yes, thank you. लास्ट बीच जो मुझे काफी गाइडेड फील हो रहा है, जो एक बूस्ट आपकी जर्नी में जो मिलेगा आपको, एक होप। कई कई बार होते हैं ना, कंटिन्यू इनर वर्क करना, कंटिन्यू मिरर एक्सरसाइज करना, अपनी जर्नी में डेडिकेटेड रहना, कभी काफी बोरिंग फील होने लगता है एक बाय द टाइम। एंड काफी जो मैं लोगों से बात करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, तो वही है कि क्यों हम कंटिन्यू कब तक करें, है ना। तो एक ही मैंने उनको गाइडेंस दिया कि आप जब स्टार्ट कर रही आपकी जर्नी, स्टार्टिंग का जो आपका फेस है, और अभी आप जहाँ कहीं पे भी हो, बस वो आप देखो, खुद का ग्रोथ ही आप देखो, एंड वहां से आपको पता चलेगा। एंड देन सडनली उनको रिवील होता है कि ओके, द डे स्टार्टेड, जहाँ पे उन्होंने कुछ पता नहीं था, एंड देन काफी एक गाइडेंस की जरूरत थी। एंड अभी जो उनका स्टेटस है कि टीचिंग से है कनेक्टेड, कोचेस से कनेक्टेड है, काफी कुछ सपोर्ट है कम्युनिटी का। एंड देन जो अभी वो कर रहे हैं अपनी जर्नी में ग्रोथ, तो वो भले ही आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में है, प्रेजेंट है, नहीं है, ब्लॉक किया है, रिवील नहीं हुआ है, जहां कहीं पे भी आपका स्टेटस है, लेकिन जब आपका डे वन से लेके अभी का जो आपका ग्रोथ है ना, कि जो एक इनर पीस आपको महसूस होता है आपकी जर्नी में, जो काफी कुछ बदलाव, आपके बिहेवियर को आप नोटिस करो, आपके रिलेशंस को आप नोटिस करो, आपके फाइनेंसिस को नोटिस, हर एक एरिया कहीं तो आपको लगेगा कि हाँ, चेंजेस आपने पाए हैं, है ना। वही आपको आगे का रास्ता कंक्लूड
कराता है कि आगे आपको कंटिन्यू करना है, and वही आपका एक गाइडेंस है कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ना कि बाहर क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, बाहर ट्विन फ्लेम क्यों चेंज नहीं हो रहा, दैट्स नॉट योर जॉब, दैट गॉड विल डू, है ना। गॉड आपका यूनियन देते हैं, बट आप जो देख सकते हो, आप जो कर सकते हो, आप अपना जस्ट आपका ग्रोथ देखो, है ना। तो कहाँ हो आप अभी, एंड स्टार्ट किया तब से लेके अब तक आपने क्या खुद में बदलाव देखे, वही आपको काफी सपोर्ट करता है। एंड मैं पर्सनली खुद को जब देखती हूँ ना, तो मुझे भी काफी लगता है कि मैं कहाँ थी और अभी मैं कहाँ पे हूँ। लाइक इनर इनर जो हमारा एक पीस की बात कर रही हूँ, इनर हमारा वर्ल्ड, जिससे काफी सेपरेशन, लाइक पता ही नहीं था कि खुद से कनेक्ट कैसे करना है, खुद को लव कैसे, सेल्फ लव जो कॉन्सेप्ट है वो रियल समझ में आया इस जर्नी की वजह से, ब्यूटीफुल जर्नी। और टीचिंग्स का काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है जो हमको सही मार्गदर्शन दिए। बस वही मैं कंक्लूजन में कहना चाहूंगी सभी हमारे व्यूअर्स को। Yes, yes. I think that completely wraps up the life, because हमने start भी उसी चीज़ से किया था कि it's a becoming, and then at the end also this is what we have to focus on, कि अभी तक हम जहाँ जहाँ पे थे और अभी हम जहाँ पे हैं, just look at the difference and you will find out how powerful the inner work is, and the journey जो आपको मिली है, सारे जो लेसन्स हैं वो कितने पावरफुल हैं। इसी रेट पे अगर आप चलते रहो, कमिटमेंट को अगर आप और स्ट्रॉन्गर बनाते जाओ, यू ऑल्सो डोंट नो व्हाट is going to become possible for you. So don't focus on the impossibility, focus on the love in your heart, and everything, love will melt away every impossibility to ground you in your union with your twin flame, and complete grounding. I'm not saying some woo 5D union, no, 3D, one life, one purpose, everything. It's completely possible. Just keep going, and yeah, keep surrendering to God. So yeah. Okay, then. If you have missed, this live, you joined late or something, then we also will upload the same thing on the YouTube channel of Twin Flames Universe India, so you can rewatch it there. And yes, if you have any further questions, maybe you can still put it in the comments, and we will be happy to answer you and guide you here. Okay. So thank you everyone for joining, and yes, have a